Assalamu alaikum students, the Knowledge School, Kite Campus, Class 1, Lecture number 18, Subject English Language and topic is Noun and Adjective. ये revision में हम worksheets करेंगे. We already have done this. Worksheet number 1, Noun. Noun is a name of any person, place or thing. For example, Ali, Karachi, table and etc. Okay, so noun क्या है? किसी भी चीज़ का नाम of any person is a name of any person, place or thing. किसी भी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी जगह के नाम को क्या कहेंगे? Noun. Okay, like Ali is a name of a person, Karachi is a name of a place, a proper place, and like common things, table, pencil, and all these. Okay. So, question is pick out the noun and write in the blank places. Sentences are given here. आपको different sentences दिए गए हैं, इसमें से noun हमने pick करने हैं. Number 1, the cat is very hungry. So इसमें किसका नाम इस्तेमाल हुआ है? An animal. And which is that? That is a cat. Number 2, a bird is flying. So इसमें noun हमारे पास क्या होगा? Bird. Number 3, Sana is sleeping. So Sana is a noun in this sentence. Number 4, the teacher walked in. So the teacher is noun in this sentence. And number 5, I live in Lahore. So Lahore is the name of proper place. So Lahore is a noun in this sentence. Okay, now we will do adjectives. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. It is used as describing word like fat, thin, sharp, etc. एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें कह दिया जाए दैट शी इज़ अ फैट गर्ल, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि फैट इज़ डिस्क्राइबिंग अ गर्ल, कि गर्ल कैसी है, हाउ डज शी लुक लाइक. ओके, जस्ट लाइक दैट if we say it's a sharp knife, okay, so we can get an idea that the knife is very sharp, so we have to be very careful when we're using it. So adjective क्या होते हैं? जो noun को describe करते हैं, ठीक है, और इनको describing in other words adjective को describing words भी कहा जाता है in grammatical term, in grammar terms. Okay, so write adjective in the given blanks. अब हमें sentences दिए गए हैं, इनमें से हमने adjectives को choose करना है. Number 1, my mom is a pretty lady. Okay, so my mom is a pretty lady. So इसमें pretty जो है वो define कर रहा है कि mom कैसी हैं? Pretty. Number 2, Ali caught the red ball. Okay, Number 2, Ali caught the red ball. अब इसमें red जो है वो define कर रहा है कि अली के पास किस कलर का बॉल है. Okay, so red ball. Number 3, I love my little puppy. So इसमें क्या डिफाइन हो रहा है? लिटिल पपी. ओके, सो पपी इज़ सो लिटिल, एंड इसमें लिटिल जो होगा वो पपी को डिफाइन कर रहा है. नंबर 4, द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल. मंकी की टेल कैसी है? इट्स लॉन्ग. एंड नंबर 5, आई लाइक माई ग्रीन ड्रेस. आई लाइक माई ग्रीन ड्रेस. सो इसमें भी ड्रेस को ग्रीन कलर जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ड्रेस कैसा है. सो ये आपकी 2 वर्कशीट्स थी, इनको अच्छे से आप लर्न करें.